Hello friends, today we'll be learning in detail about simple past tense. Simple past tense is also called as past indefinite tense, and past tense it expresses the action in the past time. In this we'll be studying in detail its sentence structure, its uses, and we'll understand this tense with various examples और साथ में हम कुछ practice examples करेंगे ताकि ये और हमें clear हो जाए. So let us start one by one. First let us see the sentence structure. Friends, there are three types of sentences which are formed in simple past tense. The first one is affirmative sentence, the second is the negative sentence, and the third one are the question sentences. Let us study the first one, that are the affirmative sentences. Now in affirmative sentences of simple past tense, the following rule is followed. First we have to write the subject, then we write the past form of the verb. Past form of the verb जो V2 form of verb है, verb हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में स्टडी किया है. If you are interested to watch that video, you can see the past form of various verbs in that video. So let us understand these affirmative sentences by examples. The first example is he went to school. So over here he is the subject और यहाँ पर past form of verb लगा है went. Go का past form of verb होता है went, and rest of the sentence is written over here. So this is the affirmative sentence of simple past tense. He went to school. Let us see one more example. यहाँ पर हमने लिया है they. ठीक है, they के साथ हमने लगाया है the V2 form of verb of play, that is played. They played very well. So these are affirmative sentences. Let us move on to the second type of sentence structure, that are negative sentences. अब negative sentences के लिए जो rule follow होता है उसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें डू और डज कुछ नहीं, इसमें सिर्फ डिड लगता है. तो डिड नॉट एंड देन द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर V2 फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पर रूट फॉर्म, दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आभा डिड नॉट सिंग वेल. फ्रेंड्स यू ऑब्जर्व ओवर हियर, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगाया है डिड नॉट और ये है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर हमने V2 फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाया, यहाँ पर सीधा हमने सिंग लगाया है. सो आभा इज द सब्जेक्ट, did not sing is the root form of verb. So Abha did not sing well. यहाँ पर हम contraction भी use कर सकते हैं. did not की जगह हम लिख सकते हैं didn't. Again in informal writings the contractions are used. Now let us see one more example. The moon over here is the subject, did not shine. Shine is the root form of verb brightly. So the moon did not shine brightly. This is again an example of a negative simple past tense sentence. Now let us move on to the third type of sentence structures, that are interrogative sentences, और इसमें हम yes no question sentences देखेंगे. इसमें जो rule follow होता है उसमें पहले हम लगाते हैं did, then comes the subject and then the root form, that is the base form of the verb with a question mark. Let us understand this with an example. The first example over here is did you attend the concert. तो यहाँ पर पहले लग गया did, then you is the subject and attend is the root form of the verb, and here comes the question mark. So इस तरीके से हम yes no question formation कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? If the answer is yes तो आप बोलेंगे yes I attended the concert, और अगर no होगा तो no I did not attend the concert. Now the next question, that is yes no question, is did Abha sing well. Friends this must be clear to you. पहले हमने लगाया है did, then comes the subject and then the root form of the verb and then the question mark. तो इस तरीके से हम yes no question की formation कर सकते हैं. तो चलिए अब sentence structure देख लेते हैं of interrogative sentences with WH question words. अब इसमें जो रूल होता है वो तकरीबन सेम ही रहता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा एंड देन द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द क्वेश्चन मार्क. लेट अस अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन डिड द कॉन्सर्ट स्टार्ट. तो यहाँ ये हो गया WH क्वेश्चन, दैट इज व्हेन, फिर आ गया डिड, देन द सब्जेक्ट
and start is the root form of the verb and then the question mark. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप WH questions भी फ्रेम कर सकते हैं. Let us see one more example. How did Abha perform? So how is again a WH question, then comes did, then is the subject, and then is the root form of verb, and then the question mark. Now friends, let us see the simple past tense uses. The first use of simple past tense is to express action that took place at some point of time in the past and are over now. कि कुछ actions जो past में हो चुके हैं और अभी वो ख़त्म हो चुके हैं, then that actions are expressed in simple past tense. Now the another use of simple past tense is to express some past habit. और अब अगला यूज है to express the action that began and ended in the past. जो actions शुरू भी और ख़त्म भी past में हो चुके हैं, उन actions को express करने के लिए हम simple past tense use करते हैं. तो चलिए इन सब uses को one by one बहुत डिटेल में with example study करते हैं. Let us see the first use of simple past tense, that is to express action that took place in some point in the past and are over now. तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है I joined the school last month. So over here this action of joining the school, it has taken place in the past, that is in the last month, and it is over now. At the present moment this is over. So I joined this school last month. So this is the first use of simple past tense. One more example of this. She received this letter yesterday. अब पिछले कल, yesterday is पिछले कल और received मतलब उसको मिलना. तो she received this letter yesterday. उसको ये letter past में मिला and now this action is over now. So by this way we can write the simple past tense sentences. Now the second use of simple past tense is to express some past habit. अब इसको हम example से study कर लेते हैं. जैसे यहाँ लिखा है I usually went home on Sundays. मैं usually Sunday को घर जाता हूँ. तो यहाँ पर ये एक past habit है. एक हैबिट बता रहा है कि संडे टू संडे वो ज़्यादातर अपने घर जाता है. तो ये चीज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. फ्रेंड्स, यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट जब वर्ड्स जैसे यूजुअली, हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है यूजुअली, तो वैसे ही अगर जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, तो ये सारे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं कोई पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तब ये सारे वर्ड्स सिंपल पास्ट टेंस के साथ लिखे जाते हैं. नाउ अनदर यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट बिगैन एंड एंडेड इन द पास्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो बाय एन एग्जाम्पल. आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन देहरादून. नाउ इन दिस फ्रेंड्स यू ऑब्जर्व कि ये एक्शन शुरू भी और एंड भी पास्ट में ही हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल होगा. नाउ वन मोर एग्जाम्पल. ही लिव्ड इन देहरादून फ्रॉम 2009 to 2015. नाउ दिस एक्शन, दिस टाइम इज इन द पास्ट. So this action began and ended in the past. So he lived in Dehradun from 2009 to 2015. So this is again an example of a simple past tense. So friends, now let us practice with some examples. यहाँ पर you have to fill in the blanks with simple past tense in the negative form of the verb. आपको यहाँ negative form of verb से fill-ups करने हैं. The first sentence is water dash in the taps. और यहाँ पर जो verb form दिया है that is freeze. तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें हमने past form लगाना है, that is did not. So the water did not freeze, क्योंकि ये root form of verb लगेगा did not के साथ. The water did not freeze in the taps. Now the second one, I dash quite hurt and the verb given is feel. तो आंसर क्या होगा? Yes, you are correct. यहाँ पर लिखेंगे हम I did not feel quite hurt. यहाँ पर felt नहीं आएगा, feel आएगा, क्योंकि root form of verb लगेगा did not के साथ.
Now the next one, a river dash near our house, and the verb form is flow. Yes, right. The answer will be did not flow. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा the river did not flow near our house. Now the next one, the match dash at 10 a.m. and the verb given is begin. तो आंसर हो जाएगा करेक्ट. आंसर होगा डिड नॉट बिगिन. यहाँ पर बिगैन नहीं आएगा, यहाँ पर बिगिन लगेगा. द मैच डिड नॉट बिगिन एट 10 a.m. and the last one over here, the stranger dash only French speak. The stranger did not speak only French. तो आ जाएगा the stranger did not speak, this is the root form of verb, only French. तो friends, I hope that simple past tense must be clear to you. You can practice some more examples related to this. And friends, if you liked the video and found it useful, do hit the like, share and subscribe button down below. Thank you.